Good evening, everybody. I am Manoj Kumar Chaudhary, Advocate Supreme Court of India. Welcome you all on behalf of Nani Palkiwala National Law Club on the occasion of 106th birth anniversary of late legend Advocate Nani Palkiwala, an eminent and constitutional luminary. Today we are on the day 4th, and today's our topic is understanding the 4 new labor law codes. As we know, that our 29 different laws which has been merged, and it has brought in the 4 different categories like code on wages, industrial relation, social security, code on social security, and the last one is occupational safety, health and working conditions code. These 4 codes cover all our labor laws which were earlier distributed in different 29 different acts. Over to you, sir, for the details. Today we have a speaker, Advocate Jaiprakash Somani. He is a very fair, fabulous, and working on a different sectors like civil, criminal, insolvency, and he is also an independent director. And he has published more than 65 books on Amazon and Flipkart. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Manoj, for your kind introduction. Friends, today's program is also exhaustive in detail. We'll cover first all 4 codes in summarize. Then we will cover each different codes and we'll complete this like yesterday's. Yesterday, you have already seen we have completed insolvency bankruptcy code, then CIRP process, then fast track CIRP process, then pre-pack CIRP process, then we have seen the liquidation. All these things are in detail, which you will know not get anywhere at one platform. And today, we will see the 4 labor codes. As Advocate Manoj mentioned, 29 our older laws are now assembled in 4 codes. And so many new things are there because some laws are older. They are not capable to handle current situation. So there are so many new changes also. We'll see. I have prepared 5 blocks on that and I will show you the block. Today, I think I will not get the time to show you the Bare Act also, but in study material, when I will put in it this course in on my app, Jaiprakash Somani Supreme Court, you will get that all study material also, all my blogs, all my these PDF Bare Act of all these codes and Government of India's one summary notes is there. So you will get all that things. And if you remember, when this act was enacted, one act was enacted in 2019, Code of Wages, and balance 3 codes are enacted in 2020. At that time, I have prepared, I have already given 1 hour detailed program on each act, this new code, in 2020 itself. All that videos are available on my YouTube channel. You can go. But at that time, act was enacted, but not notified. When Parliament passed the law, when President put its sign, that time it called Act, bill is converted into now Act. And that particular date on which President signed, that date called is the enactment of that act. But after that, 3 to 4 years time required for law commission
to prepare the rules, not law commission. Law commission is preparing the law, but government organization is preparing its rule. Department is preparing its rules. So unless and until proper rules, form, everything is there, we cannot implement that enacted law. So it takes time. And so now, recently, in November 2025, these all codes are now notified. Notified means that is applicable now. Official Gazette declaration is there. From that day, it is applicable to whole industry all over India. Organized, unorganized, skilled, unskilled, builders, small organization, big organization, household employees. It is applicable to all. So litigation is not there now today, but in passage of time, litigation will get created. It will come into the labor tribunal first. Where labor tribunal is not there, at that places this matter will be handled by the civil judge. And where labor tribunal is there, labor court. Earlier we called it labor court. Now it is a labor tribunal. Mostly at district places, labor tribunal are there, but at Tahsil places, labor tribunal are not there. So at Tahsil places, if this some litigations happens, so civil court will handle that litigation. And after labor tribunal, appeal will go to high court, and after high court, that appeal will come to my court, Supreme Court. And that time case laws will be happen. So today I will not able to give you the leading case laws on this new code because this is just enacted now. So give me few seconds to share the screen. थोड़ा हिंदी नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज हिंदी इज माई लैंग्वेज. तो मेरा हर इसमें लेक्चर में थोड़ा हिंदी रहता है तो अच्छा लगता है, मुझे खुद को अच्छा लगता है. तो नहीं तो खाली आरती किया और प्रसाद नहीं लिया तो ऐसा होता है. So just give me a few seconds. But major explanation will be in English because we have to argue, we have to prepare all the draft, everything in English. But this course is for lawyer, for corporates. This is a major corporate law. Huh? This is a corporate law Mahotsav. This is our fourth day. Earlier what we covered on first day, second day, I will tell you. Just give me a second. This is corporate law Mahotsav. And on first day, we completed entire company law and SEBI Act. On second day, RDD BFI Act and SARFAISI Act. Third day, IBC Code, CIRP and liquidation. And on fourth, new labor code laws of India. This is today. Only 3 program are balanced of this corporate law Mahotsav. Why we are conducting this corporate law Mahotsav? Because Nani Palkiwala's birth anniversary, 106th birth anniversary, is on 16th of January. So on 16th of January's lecture is only on Nani Palkiwala's contribution in legal system. So I will elaborate it in all the angles, how he argued in Keshwananda Bharati case, in other case, bank nationalization case. I will tell you that. His knowledge, his sharing, his capacity, everything I will tell you. With proper notes, with proper presentation. And before that day, on 15th, that will be our 6th day. On that day, we will cover all corporate law which are coming to Supreme Court. So how Supreme Court is handling corporate law matters. So I will elaborate all different type of
coding like that. It is very bit detailed. It will be very useful to AOR also and arguing council also. Definitely arguing council will get more benefit, but AOR will also get benefit for their filing purpose, for controlling purpose. And tomorrow we will see because from 9th onwards I'm going to Rajasthan, so I'm not physically available. So tomorrow will be one program, and then 15th and on 16th. So this corporate law also. Friends, we are organizing Women's Law Mahotsav also for 7 days. Last day will be 6th March. So I know that 8th March is Women's Day, but on 6th March we will celebrate that on big scale. And before 6th March, 7 days, we will cover Women's Law Mahotsav. So one day will be on property, women's rights in property laws. So all property laws, Hindu, Muslim, all, what are the women's right? We will cover that. So gradually we will complete that. And when Ramjet Malani, I think for 14th or 24th, I don't remember exactly that, I think 14th September will be the birth anniversary of Ramjet Malani. On that occasion, we'll cover criminal law Mahotsav on criminal laws. Same 7 days Mahotsav. And all these Mahotsav are free for Nani Palkiwala National Law Club life member. And now Nani Palkiwala National Law Club life membership is only 500 rupees for 20 years. So send this information to many others, lawyers, law students, law colleges, business houses. Take the membership of Nani Palkiwala National Law Club. You will get the chance to attend a bigger and good program free of cost, and some good courses also in well discounted rate also. So friends, today's subject is our new law code of India. ये देखो ये मैंने notes निकाल के रखे सब. So first I will take summarize of new 4 labor law codes. This is my block on this. I have prepared 5 blocks. New 4 labor code in India. +9194,000. On 21st November 2025, the government of India brought into the force the 4 comprehensive labor codes after years of discussion, consultation, and drafting. These codes are designed to consolidate, modernize, and rationalize previous labor laws and create a future-ready labor ecosystem covering wages, industrial relations, safety, and social security. The first code is the Code on Wages 2019. The objective of this code is to ensure uniform rules. Now give attention what exactly each code is covering, what content. Every lawyer need this knowledge, not only corporate lawyer. When you are practicing civil court also, you should have the knowledge. If you are practicing criminal, you should have the knowledge of this 4 labor code. I have written down these codes, you know. मैंने पूरे कोड लिख के निकाले हैं हाथ से. Just a practice. Because I'm not typing any single word. I'm not writing any single word in my law firm. 16 associates are there, drafting teams are there, filing teams are there. When matter comes to me,
I'm preparing my one audio on that matter and I'm sending to my team leader. Team leader arrange the drafting team. Drafting team drafts the matter. That matter comes to my leader. My leader see that. Then it comes to me. I observe that case laws, everything. So I'm arguing counsel. I'm not typing a single word. So writing habit should not be disappear. दिशा मागी काहीतरी लिहित जावे. मेरे गुरु रामदास स्वामी ने बताया ये. मेरे 3 गुरु हैं, आचार्य चाणक्य, रामदास स्वामी और नानी पालकीवाल. पॉलिटिक्स में मेरे गुरु जो है वो आचार्य चाणक्य है. स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे जो गुरु हैं वो रामदास स्वामी हैं. और लॉ फील्ड में मेरे जो गुरु हैं वो नानी पालकीवाल है. सो रामदास स्वामी जो है, जो छत्रपति शिवाजी के भी गुरु थे, इन हिज दासबोध ग्रंथ, दैट इज ओरिजिनल इन मराठी, उसमें उन्होंने लिखा है की दिशा मागी काहीतरी लिहित जावे आणि दिशा मागी रोज काहीतरी पाठांतर पण करीत जावे. यानी कि वी शुड राइट एवरी डे and we should memorize also every day. So I am regularly writing 1 page daily, but during these days I have got this time, I have write down all these codes by hand. So this is just my passion. I have prepared and I have broadcast that webinar also on Nani Palkiwala National Law Club platform. That may be on JSS platform also, my law firm. So every lawyer needs this. Remember that. When you need, if you read this, if you understand this, at least read my blog. Read my blog again and again. Or you can hear these videos in the form of audio on YouTube while you are working, exercising, you are taking dinner, you are taking lunch. In spare time, you can play this and read again at least these blogs and then codes. And in future, we will say we will keep only one program on one code with Barak. So separate program will be there on separate code. It is needed, definitely needed. Code on wages 2019, objective to ensure uniform rule on wages, timely payment of wages, minimum wages, equal remuneration, overtime and bonus for all category of worker across sectors. Key features: universal minimum wage. Every worker gets a statutory minimum wage irrespective of sector. Replaces fragmented state and sector specific wages. Near about ये एक in rural area 13,000 per month, in urban area 15 to 16,000. A state, it is a different in different state. This is the minimum wages per month who should pay. It is given in the law. National floor wage, a baseline wage below which states cannot set wages. नेशनल गवर्नमेंट ने कुछ एक वेज सेट करके रखा है, उसके नीचे कोई स्टेट नहीं दे सकता. हाँ, एनी one particular state can give the more than that, but not less than national line. So this is the key feature. Definition of wages. आप ये सुनते समय ना, आप लेबर के एंगल से सोचिए इसको, और उसके साथ साथ आप इंडस्ट्री के एंगल से भी सोचिए. What labor will get the benefit and how industries will flourish. When labor is satisfied, automatically productivity will get increased and industry will flourish. अंबानी ने इतने करोड़ का प्रॉपर्टी कमाया,
बिरला ने इतना कंपनी का करोड़ का प्रॉपर्टी कमाया, अदानी ने इतना करा, उसमें का कुछ वर्कर को अगर प्रॉपरली मिलता है तो जिस वर्कर के ऊपर ये कमा रहे हैं तो वर्कर हैप्पी रहेंगे, and then automatically industry will grow. And this happens. Many good organization is giving fantastic remuneration, fantastic wages to labor, good working conditions. Earlier in 80s, 70s, days are different. That time manipulation will be there. What happens there at that in that era? Manipulation of labor. But now law change, and now it is drastically changed after the enactment of this act. So definition of wages clarifies that what counts as a wage for provident fund, gratuity, overtime, etc. Overtime pay at least double the regular pay rate for extra hours. Equal remuneration prohibits gender biased pay discrimination. रूरल एरिया में रहता है ना कि फीमेल गेट्स less remuneration than male, but now it is not allowed there. Equal pay, no gender bias discrimination. Payment timelines. Wages must be paid on time, monthly or as agreed, with clear timeline for final settlements. Broad impact. Wage rules now apply across the organized and unorganized sector, including gig and platform workers. Reduces compliance complexity by having a single law for wages. Bonuses, इस लॉ में का कवर है कोड ऑफ वेजेस में, wages, bonuses and overtime instead of multiple acts. Second, Industrial Relation Code 2020. Its objective is to govern employment relations, including trade unions, collective bargainings, layoffs, retrenchments, closures, dispute resolution, strikes, and lockouts. Key provisions recognizes trade unions and their registration under uniform rules. So trade union should be registered in uniform rules. Simplified dispute resolution system replaces multiple adjudication forums with a rationalized structure of industrial tribunals. Layoff and retrenchment rules, clear threshold and procedures, including enhanced severance benefits, strike lockout regulations, mandatory notice period, and prohibition of strikes during critical period. Reskilling funds for retrenched workers to support training and re-employment. Practical changes, firm up to 300 employees in some interpretations can hire and lay off without needing government permission. More flexibility than earlier laws. ऐसा थोड़ा ये कानून है which is in favor of industries also. डिटेल में हम देखेंगे एक एक कोड का हम एक एक ब्लॉग देखेंगे और इसका बाद में आपको यूट्यूब पे भी आएगा, कोर्स में भी आएगा. कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल के साथ मिलेगा, कोर्स में थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में आएगा. और हमारे कोर्सेज है ना, अगर आप हमारे ऐप पे जाते हैं जयप्रकाश सोमानी सुप्रीम कोर्ट ऐप पे, तो कोर्सेज में है ना बहुत कम पैसे में कोर्सेज रखे हैं और लाइफ टाइम एक्सेस है वीडियो को.
जब चाहे वो जाओ अंदर, स्टडी मटेरियल सब कुछ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कॉपी कोर्सेस है, लॉ के कॉपी कोर्सेस है। पैसा मिलाना हमारा उद्देश्य नहीं उसमें, उसमें उद्देश्य है हमको एक अच्छा नॉलेज लोगों के लिए देना। नाउ आई एम 60+, जितना भी काम कर पाऊंगा और कर लेंगे तो याद रहेगा मुझे एकदम। जब 80 के आगे मैं रिटायर हो जाऊंगा या 90 के आगे रिटायर हो जाऊंगा, दैट टाइम आई विल बी, आई विल फील सेटिस्फाई, यस हमने कुछ तो भी किया। लोग मुझे पूछते हैं यहाँ पर रिटायरमेंट कब लेंगे। मेरे बेटे बेटी बोलते हैं कि आप बहुत कमाया, आपने सब कुछ किया, आप आ जाओ पुणे वापस, क्यों दिल्ली में रहते हैं अकेले। मैं बोलता हूँ मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे ना, उस दिन मैं बोलूंगा आपको, तब आप मुझे लेके जाओ यहाँ से, तब तक तो मैं काम करते रहूंगा। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज सब कुछ मैं फिट रखता हूँ खुद को, कोई व्यसन नहीं, ड्रिंक का नहीं, नॉन वेज नहीं खाते, कुछ नहीं, फूला। इसलिए मुझे 7 के 7 दिन एकदम मॉर्निंग बहुत हल्की होती है, अच्छी होती है। रेगुलर एक्सरसाइज, मैं संडे को भी कभी गैप नहीं देता, नो। तो ईश्वर की कृपा से सब चल रहा है, और आप जैसे लोग हैं जो प्यार करते हैं तो अच्छा काम करने का मूड करता है। सो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, objective to create comprehensive social security framework for all workers, including formal, informal, gig workers, platform and unorganized sector workers. इसके की एलिमेंट्स क्या है सोशल कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के? यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज एक्सटेंड्स प्रोविडेंट फंड, ESIC gratuity, insurance, maternity benefit, disability and old age support to wider workforce. Gig and platform workers for the first time recognized as eligible for statutory social security schemes. ये जो इस पे काम करते हैं ना, बिल्डर के पास काम करते हैं जो मजदूर लोग हैं, they are also covered in this. Gig and platform workers, unorganized workers, including under national schemes with portability access states. One national portal will be there, schemes will be there, प्रोविडेंट फंड नंबर एक ही रहेगा सबका। अगर उसने आपने जॉब भी बदल दिया तो सेम नंबर पे शिफ्ट होगा, सेम नंबर पे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का आएगा, आपका जाएगा, लाइक दैट। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फैसिलिटेट स्कीम डिजाइन एंड ओवरसाइट। दिस इज अ न्यू इनिशिएशन टू गिव द बेनिफिट फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर। Recent development, ESIC benefits expanded with more employees now qualifying for sickness, maternity, disability, dependent, and medical care coverage under updated code provisions. ये सब जो बेनिफिट है ना, सिकनेस लीव, मैटरनिटी लीव, डिसेबिलिटी, ये सब बेनिफिट जो है, it is called ESIC benefits. We'll see it in detail later. And fourth code is Occupational Safety, Health and Working Conditions, OSHWC code 2020. Objective of this code is to ensure safe, healthy, hygienic and fair working conditions at workplaces across sector. The key concepts of this code: unified safety standards, replaces multiple safety act including the Factories Act with one code. Working hours, daily, weekly limits, rest intervals, overtime rules, and limits on weekly hours. That is 48 hours. So 8 hour daily. And if worker is working more than 8 hours, then overtime should be paid double. Like that. Safety and health facilities, mandatory provisions for drinking water, toilets, mandatory hai, not advisory. Mandatory provisions for
ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, फर्स्ट एड रूम्स, वेलफेयर कमिटीज एक्सेट्रा। दोस्तों इसका प्रचार करो यार, अलग अलग इंडस्ट्री में जाओ, अलग अलग जगह पे जाओ, और करके ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, लेक्चर दो, लॉ कॉलेजेस में जाओ, लेकिन ये कोड का प्रचार करो। नानी पलकीवाला नेशनल लॉ क्लब का बैनर है आपके साथ, आपको जहां जाना है बोलो जाओ, ऑनलाइन लेना है तो मैं भी हूं प्रेजेंटेशन के लिए रेडी, और मेरा प्रेजेंटेशन बार बार सुन के आप भी आपका प्रेजेंटेशन तैयार करो और दो इसको, नानी पलकीवाला नेशनल लॉ क्लब का बैनर लगाओ। यस, स्टार्ट योर ब्रांच ऑफ नानी पलकीवाला नेशनल लॉ क्लब एट योर टाउन। आप मनोज को भेजिए, मनोज का नंबर है आपके पास, उसको भेजिए, उसको बोलना कि हमको नानी पलकीवाला नेशनल लॉ क्लब का ब्रांच चाहिए, ले लो ब्रांच। और इनिशियल पहले शुरुआत में आप अकेले रहेंगे, देन पीपल विल ज्वाइन, और फिर उसका ग्रुप बनाओ आपका लोकल नानी पलकीवाला नेशनल लॉ क्लब के लोगों का। एक फ्री वाले ग्रुप अलग बनाना और लाइफ मेंबर के ग्रुप अलग बनाना, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये प्रचार करो इसका, यही तो काम है हमारा। और उससे क्या होगा, व्हाट हैपन, पीपल विल नो यू ऑल्सो, you will get more cases, you will be more famous. But to get the cases, to get the money, don't do this. To spread this knowledge till end of the village, take this motto in your hand. I'm ready, we are ready from our national club to give that banner to you. Use our banner. Hmm? So working hours, safety, health facilities, free annual health checkup for workers above 40 years or where prescribed, कुछ कुछ स्टेट में कम ज्यादा हो सकता है, 40 साल के आगे के आदमी का फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये की फीचर्स इसके हैं। आई एम एवरी ईयर आई एम चेकिंग माई सेल्फ, तो कम से कम सब चेकिंग करने में 7-8 हजार रुपए, 10,000 खर्च आता है। सो ये फ्री में होना चाहिए। स्प्रेड दिस नॉलेज टू दिस सोसाइटी। अभी ये कैसे है, हमने इंग्लिश में लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा लॉयर लोग ज्यादा अटेंड करते हैं, तो but we can take this program in Hindi also, we can take this program in Marathi also. I can take this in Marathi, I can take this in Hindi also, in complete Hindi, not complete Hindi, English Hindi ऐसा मिक्स करेगा, क्योंकि पूरा हिंदी किसको आता है, पूरा मराठी भी नहीं आता है हमको, बीच में इंग्लिश बोलना पड़ेगा। लेकिन अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, करो ये काम। दिस इज माय हम्बल अपील टू ऑल who are listening this lively or who will listen this on OTT platform, on YouTube, like that. Why the four code matters? The code represent one of the biggest labor law reforms since independence, shifting from 29 fragmented act to four comprehensive, modern, uniform codes across the nation. And key expected benefits: simplified compliance for employers. This is in employers' benefit. Simplified compliance for employers, stronger worker protection and rights, portability and inclusivity for informal sector workers, clarity and harmonized definitions across laws, modern governance suited to gig and platform work, expanded social security coverage to larger share of the workforce, that is 90% in 2015 to 64% by 2025. Some practical highlights: appointment letter mandatory for all employees. हर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न फॉर कंप्लायंस रिप्लेसेस मल्टीपल फाइलिंग एंड फॉर्म। ये बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, इससे आ गई है ऑलरेडी इनेक्टेड।
notified, enacted and notified also. इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, पहले लेबर इंस्पेक्टर रहते थे, अभी लेबर उसका नाम बदल दिया है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स. Focus on advisory support rather than punishments. Reduced offenses with imprisonment. The number of jail provisions has been significantly cut under this code. Only 22 down from 87. पहले 87 जगह पे imprisonment के प्रोविजन थे, वो imprisonment के प्रोविजन निकाल के उसको फाइन में बदल दिया, और 22 जगह पे है imprisonment के प्रोविजन, with many being compoundable offenses, easing punitive pressures on employers while retaining necessary penalties for safety and security lapses. Criticism and opposition. Despite government claim on workers' protection and simplification, trade unions across India have protested. ऐसे प्रोटेस्ट करते रहते हैं, फार्मर के लिए कुछ लाओ लाओ, फार्मर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि रूटीन कोई चेंज नहीं करना चाहता. हम भी देखो, हम अभी कोई बैंक का ऐप खोलते हैं या कोई ऐप खोलते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन वो ऐप का कभी डिजाइन चेंज कर देते हैं या कोई इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, तो फिर हमको वो रूटीन का नहीं रहता, तो शुरू शुरू में दिक्कत होती है हमको उसका. तो हमको ऐसा लगता है, व्हाई दिस पीपल आर चेंजिंग अननेसेसरी देयर एप्स. सो एनी चेंज, प्रोटेस्टेंट शुड बी देयर. इजीली कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं करता है, ना मैं करता हूं, ना आप करते, ना कोई करता है. हाँ, ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी करते. सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब ये फिजिकल फाइलिंग की जगह पे ऑनलाइन फाइलिंग आ गया, और फिजिकल पेपर बुक के जगह पे जब ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, तब भी प्रोटेस्ट था, जजेस का भी था, लेकिन आहिस्ता 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 उन्होंने एक्सेप्ट किया. सभी जजेस ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जजेस हैव एडॉप्टेड दैट. आई also adopted. Now I am not carrying any paper book in court. Many lawyers, near about 50% lawyer in Supreme Court is using electronic platform. So जिस टैब के ऊपर मैं अभी आपको वेबिनार देना हूं, ये टैब के ऊपर मेरे सब 500 की 500, 600, 800 जो की ब्रीफ्स मेरे पास सब केसेस हैं. और मैं पुणे जाऊं, बॉम्बे जाऊं, किधर जाऊं, और केस लग जाता है तो ऑनलाइन आई कैन आर्ग्यू, बिकॉज आई हैव द ब्रीफ्स ऑल, लेटेस्ट ऑर्डर, फोल्डर, सब कुछ है. So any changes, people will definitely protest, because nobody is ready to accept changes. So ट्रेड यूनियन का प्रोटेस्टेंट हुआ है, होते रहेगा, arguing that the code weakens worker right, restrictive collective bargainings, and makes layoff easier, prompting national wise demonstration and calls for strikes. Summary of 4 labor codes. यहां पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दिया हूं. कोड ऑफ वेजेस 2019, इसका फोकस कहां पे है? मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट, ओवर टाइम एंड बोनस. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ट्रेड यूनियन, ले ऑफ, रिट्रिचमेंट, स्ट्राइक. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, सोशल सिक्योरिटी फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स. एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह जो कोड है वो 2020 का, वर्क प्लेस सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन. Implementation statute. Implementation status. The code came into effect on 21st November 2025 across the country. Draft rule have been published to operationalize detailed provisions including wage calculation, minimum wage mechanisms, social security board, and inspection frameworks. So friend, this is a comprehensive information related to all 4 codes. But
Now we have to go in detail in each code. I will definitely give you the break today, but after two more presentation. So total 5 presentation I have to take. So first is cover on all 4 codes, summarize. Now we will cover code on wages and industrial relation code. या कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन वेजेस, ये दो लेंगे और फिर दो जो है वो हम आफ्टर ब्रेक लेंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कोड ऑन wages. See, this is block on code on wages. The code on wages 2019 is a central legislation enacted to consolidate and modernize wage related labor laws in India. It replaces 29 law कन्वर्ट इनटू 4 कोड्स. तो फिर हर एक कोड ने कौन से लॉ रिप्लेस किया है ये भी मैं बताता हूं आपको. इट रिप्लेसेस द substance for earlier enactment, the पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का है, उसमें अमेंडमेंट करते 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 अभी तक चला रहता है. ये एक्ट इनेक्ट कब हुआ? इन ब्रिटिश रूल. और ब्रिटिश तो डेफिनेटली वर्कर के फेवर में नहीं होगा. The Minimum Wages Act 1948, the Payment of Bonus Act 1965, and then Equal Remuneration Act जो आफ्टर इंडिपेंडेंस आया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये सब लॉ into single united statutory framework, that is code of wages, applicable to all employees and establishment across the country. Full title: the Code on Wages 2019, Act number 29 of 2019, enacted 8th August 2019, and commencement notified. Different provisions commenced by notification, some rules notified subsequently. और नोटिफिकेशन कब हुआ उसका? अभी 21 नवंबर 2025, वो आगे आएगा डेट. ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोड, code on wages. Unlike traditional act with many parts, the code on wages is organized primarily into chapters that group sections by substantive themes. Chapters and sections. Chapter 1, preliminary. It covers section 1 to 4. Short title: extent, definition, prohibition of gender discrimination and dispute resolution, and on same or similar work. Chapter 2, minimum wages. Section 5 to 14. Statutory right to minimum wages, universal. Fixation and revision procedure. Components of minimum wages. Floor wage framework. Hours of works and overtime rights. एक कोड का जो चैप्टर 3 है, पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 15 to 24. Mode and period of wage payment. Time limits. Authorized deduction. Absence, fines, advances, etc. जो डिडक्शन करते हैं ना, एडवांस का डिडक्शन करना, फाइन का डिडक्शन करना, एडवांसेस का डिडक्शन करना, एब्सेंटी का डिडक्शन करना, देयर इज अ रूल. वर्कर शुड नॉट गेट ए हैमर, ही शुड नॉट गेट हैरेस्ड. सो ऑथोराइज डिडक्शन कौन से है, अनऑथोराइज डिडक्शन कौन से है? जब कभी कोई एम्प्लॉयर अनऑथोराइज डिडक्ट कर लेगा, सो डिस्प्यूट अराइजेस देयर, एंड दैट डिस्प्यूट विल क्रिएट द लिटिगेशन.
First give notice. If he is not obeying the notice, then file the petition in labor court or in civil court. Then appeal. How workers will give the fees to lawyers? So when worker collectively coming, that time small share they have to give, and advocate can give them good justice in reasonable fees. जब भी कोई लेबर का कोई बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा, आई एम ऑलवेज helpful to you. My law firm is helpful to you. Many Supreme Court lawyer will helpful to you. In very reasonable fees, we will try to give the justice to the workers, worker category, labor category. Payment of wages, then chapter 4, payment of bonus, section 26 to 36. Eligibility, computation of bonus, available surplus and disqualifications. Chapter 5, advisory board, section 42 to 44. Establishment of central and state advisory board to advise on minimum wage fixation. Get mastery on these laws and try to get the entry in this advisory board as a lawyer. Chapter 6, payment of dues, claim audit, section 45 to 49. Procedure for claims and recovery of wages, bonus, dues. Chapter 7, inspector cum facilitator, section 50 to 51. Inspection, facilitation and duties of enforcement officers. पहले कैसे आते थे? डायरेक्ट आते थे, आपने ये नहीं लगाया, फाइन, इमीडिएट शो कॉज नोटिस, इमीडिएट एक्शन शुरू. नो, now inspector cum facilitator will give the visit, and if there is no proper procedure followed as per new code, he will first advise them, do this. 1 or 2 times they will advise, and if that employer is not following that time action will be taken on that particular employer. So first they are facilitator and then they are inspector. So inspector cum facilitator, what is that? Chapter 8, offenses and penalties, section 52 to 56. Penalty provisions, cognizance of offenses. Chapter 9, miscellaneous, section 57 to 67. Bar on suits, protection of action, burden of proof, power to make rules, etc. Key objective and approach. बहुत डिटेल में ब्लॉग है ये, बहुत डिटेल में ब्लॉग है. Key objective and approach. The code aims to create a unified legal framework governing wages, overtime, minimum wages, remuneration and bonus. Ensure universal applicability covering all employees regardless of industry, wage ceiling and employment category. Introduce a national floor wage so that no state may fix minimum wages below a statutory national threshold. So statutory national threshold जो वेज का मिनिमम वेजेस का है, उसके नीचे कोई भी स्टेट नहीं दे पाएगा. हाँ, उसके आगे देना है किसी, महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव है, उसने थोड़ा ज्यादा पास करना है, तो फिर अपने आप ही एम्प्लॉय ज्यादा काम करेंगे महाराष्ट्र में जाके. गुजरात अगर प्रोग्रेसिव है, तमिलनाडु प्रोग्रेसिव करेंगे ज्यादा, और जो स्टेट कम प्रोग्रेसिव है थोड़ा कम रखेंगे. जैसे जैसे वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, दे विल इंक्रीज दैट मिनिमम वेजेस, बट नो स्टेट इज अलाउड to give below than national threshold limit. So labor laws comes into concurrent list of the constitution. It is under state also,
and it is under union also. So every state have right to amend these laws, but there is a national threshold limit. They should not give any benefit below that national threshold limit. Strengthen, prevent gender discrimination in pay and employment condition. Strengthen timely wage payment, transparency, and worker protections. Important sections and their impact. हमने पहले देखा वो चैप्टर, और वो चैप्टर में कौन से सेक्शन है ऐसे देखा हमने. नाउ very very important section I want to elaborate. Section 2 is related to definitions. Yesterday I already told you, whenever you read any law, first read the definition section, because you should understand each and every. हमको हर एक डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो जो डेफिनेशन मालूम है वो क्यों पढ़ने का. खाली जो नया है, अभी गीग वर्कर है, हाँ प्लेटफॉर्म वर्कर है, इसका डेफिनेशन क्या है ये आप पढ़ो. Then you understand it, what it covers, and then read the law. लॉ भी पूरा की पूरा सेक्शन वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है. अरे इतने साल से हम प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ तो मालूम रहता है. जो नया है वो देखो, जस्ट गो थ्रू दैट. ये इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके. ओके, जो नया है जस्ट रीड दैट, डोंट टेक बॉदरेशन. और मैं तो बोलता हूँ आपके जो फ्रेंड लोग हैं ना लॉयर के, 4 फ्रेंड का एक ग्रुप करो और एक कोड पढ़ने के लिए ले लो, और रोज 1 घंटा बैठो. थोड़ा ये पढ़ेगा, थोड़ा ये पढ़ेगा, थोड़ा ये पढ़ेगा, 15-15 मिनट एक एक आदमी पढ़ेगा ना, तो 1 घंटे में बहुत अच्छा हो जाएगा. और मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 5 डेज 6 डेज में एक कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा. हम ऐसे एजुकेशन लेते समय करते थे. हम तो छुट्टियों में सब, जब छुट्टियां लगती थी ना, सपोज हम 7 से 8 जाते थे, तो 7 कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट लगता था ना, और उसके बाद समर वेकेशन लगते थे, तो 7 का रिजल्ट लगता था ना, पास हो गए हम, तो फिर हम बुक ले लेते थे 8 के उसी दिन. जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन बुक लेते थे, और हम 4 फ्रेंड थे, और हम वो सब बुक्स छुट्टी में ही पढ़ के निकालते थे. ऑल बुक्स, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जो पढ़ता है, जो पढ़ने जैसे बुक है, जो प्रैक्टिस के बुक रहते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें का पढ़ने का पार्ट पढ़ते थे. और जब स्कूल शुरू होता था तो हमारा कंडीशन ऐसा रहता था कि हमको सब के सब बुक्स हमने पढ़ के निकाले एक बार. तो जब पढ़ाते थे टीचर ना, तो हमारा फर्स्ट रिवीजन होता था वहां पे. और बहुत हम वी हैव नॉट सैक्रिफाइस आवर हॉलीडेज. वो हॉलीडे तो रोज तो खेलते ही खेलते हैं, अभी बच्चे थे तो खेलते ही थे, लेकिन वो खेलने में इसके 2 घंटे निकालते थे खाली हम, ओनली 2 आवर्स. एक सुबह के टाइमिंग में 1 आवर निकालते थे, एक इवनिंग टाइमिंग में 1 आवर निकालते थे, बाकी दिन भर खेलते ही थे, खेलते थे. वो कोई इश्यू नहीं है. वी हैव नॉट सैक्रिफाइस आवर हॉलीडेज, बट वी हैव डिसिप्लाइन आवर हॉलीडेज. आज भी वही करते हैं हम, आज भी करते हैं. 60+ एज है तो भी हम करते हैं. हम कोई छुट्टी बेकार नहीं जाने देते. वो छुट्टी में कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, लेकिन हम एंजॉय भी करते हैं. बीबी को लेके घूमेंगे, सब घूमेंगे, सब जब भी पुणे जाता हूं, 4 के बाद का टाइम पूरा मेरी वाइफ का रहता है. दोपहर का टाइम पूरा मेरा रहता है. मैं पूरा आर्ग्यूमेंट करूंगा, और करूंगा, वेबिनार लूंगा, कुछ लूंगा. 4 के बाद कुछ मीटिंग लेना है, वेबिनार लेना है, तो आई हैव टू आस्क टू माय वाइफ, भाई लू क्या. या कोई क्लाइंट मुझे फोर्स करता है ना कि सर 5 बजे आपको मिलने के लिए आना है पुणे में आपके ऑफिस में, तो मैं बोलता हूँ भाई 5 बजे आना है तो मेरी वाइफ का नंबर देता हूँ, उसको पूछो, अगर वो परमिशन देती तो मैं आपको मिलने के लिए तैयार हूँ. बिकॉज माई वाइफ्स टाइम है, क्योंकि एक तो मैं पुणे जाता हूँ महीने में 2-3 दिन, उसमें अगर मैं दिन भर मीटिंग लेते रहूंगा तो कैसे चलेगा. हाँ, वो जो मिलने के लिए आते हैं मुझे पुणे, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, कर्नाटक के आते हैं, उनका दिल्ली आने का चक्कर बढ़ जाता है. आई एम गिविंग दैट टाइम, नो इशू, बट आई एम नॉट सैक्रिफाइस हॉलीडेज ऑल्सो. बट वी हैव द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इट फ्रेंड्स. इसलिए व्यस्त रहो तो मस्त रहेंगे. हमारे मराठी में एक मन है, व्यस्त तो मस्त. जो व्यस्त रहता है ना वही मस्त रहता है. बिजी रहो. सो Section 2 is a definition. Section 3, prohibition of discrimination. This is a very important section. Prohibit discrimination on the ground of gender
in matters relating to the wages of same or similar work with the same employer. This provision aligns with the constitutional equality principle, Article 14, and equal pay tenets, interprets by courts. For example, Mackenzie doctrine on equal pay for equal work. There are so many Supreme Court judgment are there. मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 65 बुक्स में तो मेरे ख्याल से 10 एक तो बुक्स तो मेरे इसके ऊपर होंगे, लेबर लॉ के ऊपर ही होंगे. इतना इतना हमने सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ, हम पागल है, पागल. हमको लोग पागल बोलते, पागल. आई एम फंड ऑफ दिस केस लॉज. जब तक हम केस लॉज पढ़ते नहीं ना, सोते नहीं है. कोई ना कोई केस लॉज पढ़ेंगे रोज. बिकॉज वेन वी रीड द केस लॉ, वेन वी रीड द जजमेंट, I'm practicing in Supreme Court, so I'm reading the Supreme Court judgment. But if you are practicing in High Court, you read the High Court judgment and sometimes Supreme Court judgment. So when we read the judgment, we comes to know how law is practically applicable. So book of law is theory, and judgment of that particular court is the practical application of that law. आपको याद है जब 11वीं से लोग 10वीं से लोग 11वीं साइंस जाते हैं ना, साइंस में वही टिकता है. नहीं तो साइंस फैकल्टी छोड़ के कॉमर्स को भागेगा, आर्ट्स को भागेगा. साइंस को वही टिकता है और वो आगे जाता है जो इंजीनियर बनते हैं या मेरिट में आता है, आईआईटी में वगैरह जाता है. ये मनोज चौधरी ना मेरा एसोसिएट, उसकी बेटी आईआईटी, शी इज कंप्लीटिंग हर डिग्री इन आईआईटी दिल्ली. इतने होशियार है, ये भी बीटेक है, बहुत होशियार लोग हैं ये. बट वेन दे कैन सस्टेन इन साइंस फैकल्टी, वेन दे नो द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, how that law is applicable in practical life. Similarly, when you read the law, you know the theory of that law, and when you read the judgment, you comes to know the practical application of that particular law. इसलिए मेरे बहुत सारे बुक्स हैं इसके ऊपर. Section 5, minimum wages. Establish a minimum wages rate of wages for all employees. No employer shall pay less. This is a fundamental right under labor law. Sector 9, floor wages. Empowers the central government to fix a national floor wage based on a minimum living standards. States must not notify minimum wages below this floor. नेशनल फ्लोर पे जो वेज रेट है उससे कम स्टेट ने नहीं देना है, बस दिस इज द रूल. एक आधा नीचे स्टेट देने लगा, हाईकोर्ट में केस जाएगा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट विल गिव द डायरेक्शन, एंड देन one case laws will be get created. Section 13, 14, working hours and overtimes. Government may fix the hours and constitute a normal working day. Overtime must be paid at a rate not less than twice the normal rate. देखो वर्डिंग क्या है, डबल देना चाहिए ओवरटाइम, ऐसा वर्डिंग नहीं है, सीधी वर्डिंग. Overtime must be paid at the rate not less than twice. तो डबल से कम नहीं देना, यानी कि एक आधा एम्प्लॉयर 3 टाइम्स भी दे सकता है, एक आधा एम्प्लॉयर 4 टाइम भी देता. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबल अगर ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिकली जहां पे स्किल्ड काम होता है ना, वहां पे तो आराम से दे सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो फिर हम लॉ से भी ज्यादा देते हैं, ऐसा बोलने का एक समाधान भी होता है, अलग होता है ऐसा होता है. सो नॉट लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल रेट. चैप्टर 3, पेमेंट ऑफ वेजेस. अरे कहां है वापस, हाँ,
Chapter 3, Payment of Wages, Section 15 to 24, ensures mandatory mode and period of wages payment, daily, weekly, fortnightly, monthly, and strict time limit, reducing wage delay disputes. Chapter 4, Bonus, Section 26 to 36, defines eligibility, computation of bonus, and allocable surplus. Consolidating bonus rules that previously existed under a separate enactment. Chapter 8, Offenses and Penalties, includes penalties for non-compliance with wage provisions, delayed payments, improper deductions, etc., often strengthened compared to prior laws. Coverage and applicability. The code applies to all employees and establishment across sectors, both organized and unorganized, irrespective of wage ceilings. It redefines protections previously limited by wage and sector thresholds. Judicial context and relevant case laws. अभी तो सुप्रीम कोर्ट के नए कोड के ऊपर तो लॉज नहीं है, लेकिन सिमिलर सिचुएशन के ऊपर जो केस लॉज है उसमें कि कुछ मैंने देने की कोशिश की आपको. While the code on wages is relatively new, the specific case laws directly under the code is still evolving. Codes have long interpreted principles that underpin the code's core concepts. Equal remuneration and equal pay principle. Before the code subsumed the Equal Remuneration Act, Supreme Court cases like McKenzie versus India in 1980s established the doctrine of equal pay for equal work, finding that employees performing the same or similar work should receive equal remuneration. A principle now explicitly codified in Section 3 of this code. Minimum wages as a fundamental right. In past cases under Minimum Wages Act 1948, courts held that paying less than minimum wages violate statutory right of workers, although these pre-code cases were under the Minimum Wages Act, their reasoning supports enforcement of Section 5 of the code because the code has now made minimum wages as universal statutory right. Great, great. Salute to Law Commission people. I'm also part of Law Commission. My law firm is also part of Law Commission. We are regularly visiting to Law Commissions. दिल्ली में बैठे तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना भाई. Payment and timelines and wages definition. Prior judicial clarification on wage definitions, overtime, and employer obligation under earlier laws will continue to guide interpretation of similar provision in Code of Wages once disputes arise before High Court or the Supreme Court. Policy impacts and key reforms. Universal minimum wage coverage across sector and job types, a major expansion over prior laws. Uniform definition of wages helps reduce litigation and interpretation conflicts. Floor wage mechanism provides a baseline of workers' protection nationwide. Gender equity in pay mandated directly by statute. Timely wage payment safeguards with defined payment timelines and clear deduction rules. My concluding remarks on the Code of Wages 2019 represents a major overhaul of wage-related labor law in India by unifying 4 disparate enactments into a single framework that
ensures universal minimum wage protection, strengthens timely payment and wage definitions, codified equal pay principles, and streamlined compliance and enforcement. Although specific Supreme Court judgments under the code are still developing, established wage principles on equal pay and minimum wages from earlier jurisprudence strongly inform how the code will be interpreted and applied in practice. Before giving break, I have to cover one more. ये लंबा चलने वाला है थोड़ा सा, 9:30 तक तो आराम से चलेगा, 9:30 9:45 तक जाएगा, but I have to complete at any cost. So we have finished code on wages. Now we'll go in industrial relation code. Industrial code, relation code. This is my block on industrial code. The Industrial Relation Code 2020 is one of the 4 new labor law code in India enacted to simplify and consolidate multiple pre-existing labor statute relating to the trade union, industrial dispute, and employment condition into one unified law. It subsumes 3 major earlier statutes: Trade Union Act 1926, the Industrial Dispute Act 1947, and Industrial Employment Standing Orders Act 1946. ये 3 लॉ इकट्ठा के ये कोड बना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन. इसमें का मेन जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था 1947, और ये बाकी 2 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था. नाउ इट इज समराइज्ड इनटू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड. What is difference between act and code? So act gives only law principles and code gives law principle plus its processes, like IBC, Insolvency Bankruptcy Code. So code is more comprehensive, elaborative, objectives and legal background. The objectives of the code includes providing a uniform legal framework for industrial relations, dispute resolution, retrenchment, layoff, closures, etc. Ensuring industrial peace and harmony through codified process for negotiation, settlement, and adjudication. Modernizing definitions and compliance procedures while balancing employment security with business flexibility. Enacted on 28th September 2020 and effective on 21st November 2025 after formal notification. The structure of this code, Industrial Relation Code का structure क्या है? Chapter and sections. The Industrial Relation Code 2020 contains 104 sections organized into 14 chapters and 3 schedules. Chapter wise breakdown here. बहुत सिस्टमैटिकली ये ब्लॉक में आया है दोस्तों, सब चीजें. ये इसको बार बार सुनते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बार बार देखते रहो, बार बार एक्सेस करते रहो. ये मेरे वीडियो मुझे भी काम आते हैं बहुत. मैं खुद भी मेरे वीडियो फॉलो करते रहता हूँ, बाकी की भी फॉलो करता हूँ. नानी पालके वाले के ऑडियो फॉलो करता हूँ. आई एम फॉलोइंग रामजेठ मरानीज ऑडियो, DY Chandrachud's, our RF Nariman, Justice RF Nariman's audio videos. If you go on my YouTube channel, you will find one playgroup, JB Laws. JB Laws. तो JB Laws में आपको मैं जितने भी अच्छे लेक्चर मुझे लगे, मेरे दूसरे के वो दूसरे के लेक्चर उसमें पूरा है, दूसरे स्पीकर के, उसमें जो मेरे फेवरेट है वो मैंने रखे वहां पे, और पब्लिक है, यू कैन एक्सेस दैट डेफिनेटली.
you have to subscribe that channel and you can accept. And free of cost subscription है. मैंने थोड़ा पेड रखा था लेकिन पेड भी निकाल दिया मैंने, अभी पूरा फ्री रखा है यूट्यूब पे. And my lectures you will find in different play groups. So Supreme Court का play group अलग है, Supreme Court के lectures का play group अलग है. Then you will find one play group of Nani Palkewala National Law Club. I said different play groups are there of my lectures. But JB Laws is a separate folder which includes all luminaries lectures, legal luminaries. So the chapter, subject and sections. Chapter 1, preliminary, 1 to 2 section. 2, by parties forums, 3 to 4. 3, trade unions, 5 to 27. 4, standing orders, 29, 28 to 39 section. 5th, notice of change, 40 to 41 section. 6, voluntary reference of dispute to arbitration, section 42. 7, mechanism for resolution of industrial dispute, section 43 to 61. 8, chapter 8, strikes and lockouts, section 62 to 64. Chapter 9, layoff, retrenchment and closure, section 65 to 76. 10, special provisions related to layoff, section 77 to 82. Section 11, worker reskilling fund, section 83. Chapter 9, worker reskilling fund, section 83. Chapter 12, unfair labor practices, section 84. Chapter 13, offenses and penalties, section 85 to 89. And chapter 14, miscellaneous, section 90 to 104. Schedules, matters to be provided in standing orders, unfair labor practices, conditions of service for change with notice. जो लॉ के नीचे शेड्यूल्स रहते हैं ना, वो शेड्यूल ये 3 इसमें दिया है. Important sections now and key legal concepts. ये बहुत इंपॉर्टेंट है to understand the law code like that. इसके बाद ब्रेक दूंगा मैं आपको. Chapter 1, preliminary, section 1 to 2. Section 1, short title, extent and commencement. Section 2, definitions, introduces key term like worker, industry, employer, etc. with inclusive and updated definitions intended to broaden coverage. Chapter 2, by parties forums, section 3 to 4. Section 3, works committee to promote cooperation between employer and workers. Section 4, grievance redressal committee for establishment with 20 or more workers. Chapter 3, trade unions, section 5 to 27. It covers registration of trade unions, rules and criteria for membership, recognition of a negotiating union and councils, rights and immunities of office bearers, adjudication of trade union disputes. Chapter 4, standing orders, section 28 to 39, establishes uniform standards of classification and discipline for workers in industrial establishment with provisions for certification and enforcement. Chapter 5, notice of change, section 40 to 41, requires employers to provide advance notice before altering service conditions specified in standing orders. Chapter 6, arbitration, section 42, enables voluntary reference of disputes to arbitration where both parties consent. Chapter 7, dispute resolution, section 43 to 61, provides mechanism for conciliation, adjudication, industrial tribunal, and national industrial tribunal to resolve industrial disputes. Chapter 8, strikes and lockout,
Section 62-64 requires 14 days notice, not exceeding 60 days before strike and lockout. Strike includes mass casual leave, 50% or more taking leaves. This makes a statutory right to strike subject to procedural safeguards, not a fundamental right. This is very important. A principle long recognized in labor jurisprudence where courts held strike rights as a statutory and not absolute. So strike is the statutory right. It is not a fundamental right. It is not an absolute right. Chapter 9 and 10, layoff, retrenchment and closure. Section 65 to 82. Layoff and retrenchment conditions and obligation for employers. Threshold and permissions. Establishment with 300 or more workers required government permission for layoff, retrenchment, closure. किसी को कंपनी अपनी बंद करना है और 300 एंड मोर वर्कर्स हैं तो ही नीड्स टू गेट द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. But below 300 people, no need to take the permission from the government. So this is law. Required government permission for layoff, retrenchment, closure, replacing the earlier 100 workers threshold. These provisions are pivotal in balancing flexibility with employee protection. Chapter 11, Worker Reskilling Fund, Section 83, provides for wages, Section 15 days, for example, 15 days, to be contributed by employees into a reskilling fund for retrenched workers. Chapter 12, Unfair Labor Practices, Section 84 and Schedule 2, defines unfair practices by employers and unions similar to old statutory list but consolidated. Chapter 13, Offences and Penalties, Section 85 to 89, specific penalties and enforcement mechanisms for non-compliance with code provisions. Chapter 14, Miscellaneous, Section 90 to 104, covers procedure for service, appeals, overriding provisions, and power to make rules. Key legal principles and Supreme Court contexts. Although specific Supreme Court judgment under this Industrial Relation Code itself are still evolving due to its recent enforcement. Judicial principle developed under earlier labor law statute remain relevant and guide interpretations. Relation Bank to Industrial Dispute Act principles. Many relation back to Industrial Dispute Act principles, many doctrines from Industrial Dispute Act 1947 continue to inform the court's dispute resolution scheme. ये डॉक्ट्रिन से मुझे याद आया कि मेरा एक बुक अनपब्लिश रह गया है, मैंने दिमाग से निकल गया है, जो मैंने डॉक्ट्रिन के ऊपर तैयार करके रखा है. So what are the legal doctrines which we are using regularly in High Court and Supreme Court arguments? So not only doctrine and its meaning there, but doctrine in that book, meaning, and the birth of how that doctrine take birth, in which case that doctrine is like a basic structure, doctrine of basic structure took place in Keshavanand Bharati case. So different doctrines takes place in different cases. तो वो इसका ऐसा विस्तार से दिया है उसमें बुक में मैंने, बट आई हैव नॉट इट पब्लिश दैट. अभी 65 प्लस बुक्स है मेरे ख्याल से, 70 या 72 कुछ तो भी हुए होंगे. अभी कितने दिन बोलना ना, 72, 73, 74, 75 छोड़ देने का. अभी यहाँ से आगे बोलना ही नहीं, यहाँ से आगे खाली 65 प्लस ही बोलने का. 100 भी हुए तो 65 प्लस ही बोलने का. हाँ, 100 के आगे जाएंगे ना फिर 100 प्लस बोलेंगे. एंड दिस इज माई टारगेट बिफोर गोइंग
before taking retirement from my practice, at least 500 books should be there. And credit goes to my team. मेरे पास जो इंटर्स रहते हैं, जूनियर्स रहते हैं, वो सब मिलके हम काम करते हैं. डायरेक्शन मेरा रहता है, लेकिन योगदान हर एक का रहता है. इसलिए मेरे हर बुक के ऊपर आपको मेरे नाम के साथ और एक या दो नाम दिखेंगे, तो जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प किया है वो लॉयर के दिखेंगे. काफ़ी बुक्स में मनोज कुमार चौधरी है, काफ़ी बुक में श्रुति कीर्ति है, काफ़ी बुक में पूजा राय है, काफ़ी बुक में ये है, एक मेहता नाम की लड़की थी कोविड में, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम. वो एडवोकेट बन गई अभी. वो तो इंटर थी खाली, तो भी उसने अच्छा हेल्प किया था मुझे इन कोविड, व्हेन आई वाज क्लीनिंग द यूटेंसिल, किचन यूटेंसिल इन दैट 2 months, 2-3 months पुणे में. वर्कर्स नहीं आते थे तो सब बांट के काम कर लेना था. तो वाइफ ने मुझे पूछा कि आप क्या काम लेंगे. मैं बोला आप क्या लेगी. बोले मैं रसोई करती हूँ. फिर बेटा बोला हम सफाई करते हैं. हम तीनों ही थे घर में. बेटी की तो शादी हुई थी, वो ससुराल गई थी. बेटी की शादी नहीं हुई थी, बहू भी नहीं थी, और सब एम्प्लॉय कोई नहीं आ रहा था, तो तीनों को काम लेना था. तो मैं बोला भाई मुझे रसोई का तो उतना नहीं आएगा अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ कि जो मैं इजीली कर सकता हूँ वो काम है बर्तन मांजने का. कि थोड़ा स्किल लगेगा तो, लेकिन 2-3 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा. तो मैंने पूरा 2 महीना बर्तन मांजने का ही काम किया. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, बर्तन मांजने को कितना टाइम लगता है, सुबह एक आधा घंटा, शाम को एक आधा घंटा. बाकी का टाइमिंग में फिर ऑनलाइन हियरिंग चलता था सुप्रीम कोर्ट का. तो कभी कभी तो इतना मजा आता था ना कि ऑनलाइन हियरिंग हो गया, मेरा मैटर हो गया, तो मैं थोड़ा सा बाकी कोर्ट का प्रोसीडिंग देखता था रिमेनिंग. तो मेरी वाइफ बोलती थी आपका हो गया क्या काम, हियरिंग हो गया ना आपका, नंबर खत्म हो गया ना आपका, करो बंधो और बंदर बांझो. बहुत मजा आता था. ऐसा एक डाउन टू द अर्थ लाया भगवान कोविड ने. मैं भगवान ही बोलता हूँ कोविड को, नॉट एनिमी अकॉर्डिंग टू मी. बहुत इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ाया, बहुत थिंकिंग के ऊपर फोकस किया, बहुत एसिमिलेशन मेरे फैमिली के साथ मेरा हुआ. और एक माऊ भी थी, छोटी माऊ हमारे पास, वो माऊ भी खेलती थी हमारे साथ. माऊ बोली तो छोटी बिल्ली, हाँ, तो वो भी थी. तो बहुत मजा आया उस समय. हाँ, ऐसा. तो उस समय मैंने कम से कम 10 किताबें कंपेल किए थे, पब्लिश किए थे. सिमरन मेहता, हाँ, वो सिमरन मेहता लड़की थी, वो आज तक मैंने उसको कभी नहीं देखा. ऑनलाइन इंटर्नशिप करती थी, दिल्ली में ही रहती है, लेकिन कभी मौका ही नहीं आया मिलने का, क्योंकि मेरा काम पूरा सुप्रीम कोर्ट का ही चलता है और वो ट्रायल कोर्ट में काम करता है. तो मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं आता है, और उसका सपना खाली फोन होते रहता है, फोन पे बात करती रहती है, एडवाइस लेती रहती है. तो फोन पे बात करते होते तो वो बोलती थी कि मुझे जुडिशरी में इंटरेस्ट है सर, सो आई विल फोकस ऑन जुडिशरी प्रिपरेशन एंड आई विल फोकस ऑन ट्रायल कोर्ट. तो जिसकी उसकी प्रैक्टिस रहती, मर्जी रहती है, तो वो हिसाब से वो लड़की ने वो काम किया. लेकिन आई रिमेम्बर नियर अबाउट 10 बुक्स का योगदान उसका था मेरे कहने के अनुसार. उसने बहुत अच्छा तरह मुझे हेल्प किया था वो बुक्स बनाने में. तो ऐसे अलग अलग लोगों का, तो आप जस्ट गो ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जयप्रकाश सोमानी बुक डालो, या मेरे वेबसाइट पे जाओ, आपको पूरे बुक्स के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे पूरे. तो यू कैन गेट दैट. मेरे 2 वेबसाइट है, jayprakash.somani.com भी है और supremecourtlawfirm.com भी है. सो डॉक्ट्रिन से मुझे याद आया था वो बुक का, कि भाई डॉक्ट्रिन का एक बुक किताब मेरा अभी है, लाइक दैट. So many doctrines from Industrial Dispute Act 1947 continues to inform the court's dispute resolution scheme, such as right to fair adjudication of dispute by tribunals, limited entitlement to strike lockout subject to statutory procedures, permissible retrenchment and layoff with conditions, to collective versus individual disputes, in standard vacuum refining company versus their worksman AIR 1961 SC 895 a citation. The Supreme Court recognized that an individual dispute
can take on a collective character when supported by multiple workers. A principle relevant under dispute adjudication provides in this code. Balance employers' right. Balancing employers' right. In T.K. Rangarajan versus Government of Tamil Nadu 2003 6 SCC 581, the Supreme Court struck down prior government permission required for closure under older law as a restriction on employers' fundamental right under Article 19(1)(g). Very nice judgment, बहुत अच्छी judgment है. Holding that condition like notice and compensation are reasonable, this balance between job security and business freedom continues to influence how new threshold and permissions in this code may be interpreted. 4. Employment definitions. Cases on who qualify as a worker employees under labor legislation may guide interpretation on the labor's definition of worker and industry, vital for determining coverage of right, general labor jurisprudence. 5. Key policy and practical changes in the code. Higher threshold of layoff, retrenchment, closure from 100 to 300 workers. The industrial code जो relation code है ना is applicable from 100 labor onwards. 100 अगर लेबर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके आगे है तो उनको एप्लीकेबल है. सो threshold of layout, retrenchment, closure from 100 to 300 workers, increasing flexibility in hiring and firing. Mandatory 14 days notice for strike lockout in all industries. Workers Committee and Grievance Redressal Committee to address workplace issues internally. Worker Reskilling Fund, no equivalent in old act. Unified definitions and mechanisms, reducing fragmentation and strengthening ease of compliance. Ongoing judicial issues and High Court observation. A 2025 High Court decision highlighted that the code was brought into force without formally repealing earlier statutes in notification, prompting judicial scrutiny on procedural adherence, a developing legal issue worth watching in industrial relation litigation. Now, concluding remark on this Industrial Relation Code. The Industrial Relation Code 2020 is a comprehensive consolidation of India's industrial relations and dispute law framework, designed to simplify, modernize, and balance worker right and with business flexibility. It replaces three foundational statute and introduces updated procedures and threshold, aims at promoting industrial peace, structured dispute resolution, and unified labor law ecosystem. While direct Supreme Court jurisprudence under this code is still emerging, established principles from industrial dispute jurisprudence, that is on strike, layoff, employer's right, will continue to shape its interpretation in months and years ahead. कितना मजा आता है ना? Now I'm stopping screen. Yes. So friend, I will take break, only 5 minutes break, and then we will continue and we will cover balance 2 code, because entire proper comprehensive that blog is there, so you will get all this centralized idea. It is very useful for practice. खाली जब आपको ड्राप करना है या आर्ग्यू करना है उस समय पर्टिकुलर उस सेक्शन में बेयर एक्ट में जाके देखना पड़ेगा, बराबर है. तो बस उतना ही मैंने रखा है, इतना इजी करके आपको दे दिया है. और मेरा एक सीरीज आने वाला है, सेपरेट सीरीज आने वाला है
नो योर लॉ जनरल पब्लिक के लिए आएगा। वो पूरा कि ज्यादा हिंदी में रहेगा, इंग्लिश थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि मुझे जनरल पब्लिक के लिए बनाना है कोई सीरीज कि नो योर लॉ। उसमें हर हफ्ते में मैं एक बनाऊंगा। वेबिनार में आप भी आ सकते हैं, जनरल पब्लिक को आप फॉरवर्ड करो, और वो उसमें मैं एक एक लॉ लूंगा। जैसा बीएनएस है, बीएनएसएस है, ये अपना बीएसए है, जितने लॉ है, मैं सेंट्रल के मोर देन 1500 लॉज है, स्टेट के लॉज अलग हैं। तो जो इंपॉर्टेंट लॉज है 100 लॉज, वो 100 लॉज हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो हफ्ते में अगर एक बार मैं लेता हूं ये, तो 52 वीक्स आर देयर इन अ वीक, इन अ ईयर। सो 52 मैं लॉ कंप्लीट कर पाऊंगा एक ईयर में। तो 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर ऐसे लगेंगे। तो 1500 लॉ कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे? ऐसे कुछ लॉ होंगे हैं कि जो मैंने आज तक मैंने रेफर नहीं किया है, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, नेशनल फ्लैग एक्ट देखा है क्या आपने कभी? पढ़ा है क्या कभी? है। तो ये सब लॉ के ऊपर हमको बना, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट लेंगे, फिर थोड़े से बी ग्रेड के लेंगे, फिर सी ग्रेड के। ये एक्चुअली सब ए ग्रेड के ही रहते हैं लॉ, विच इज फॉर आवर प्रोटेक्शन। All laws are A grade. I should not discriminate between law into A grade and B grade, but as per the common practice of citizen, common practice of lawyers, so we can categorize it between A, B, and C. So first we will cover A laws, then we will cover B laws, C law. अब ईश्वर जब तक मुझे बोलने का सामर्थ्य है मेरे शरीर में, तब तक मैं करूंगा। जब मुझे लगेगा कि नाउ आई शुड नॉट, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करूंगा। लेकिन फ्लुएंट बात नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़े शब्द अड़ रहे हैं। और डेंटिस्ट जो मेरा है ना, वो डेंटिस्ट को बहुत मेरा एक क्या बोलते हैं, आई एम थैंकफुल टू दैट डेंटिस्ट। उसने मेरे 32 की 32 दांत अभी तक क्लियर है। जब तक मेरे दांत क्लियर है ना, तब तक प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ नहीं होगा। एक बार दांत जाने लगेंगे ना, तब है। लेकिन मैंने उसको बताया ऐसा, हर 6 महीने में जाता हूँ, चेकअप करता हूँ, सब करता हूँ, वो आई एम फॉलोइंग द प्रोसेस प्रॉपरली। तो होता है। तो जब तक दांत क्लियर है ना, तब तक फिर कोई इशू नहीं रहेगा। तो प्रोनाउंसिएशन है, तो मेरे ख्याल से 75 तक तो कर पाऊंगा, नहीं से नहीं, आराम से। उसके बाद शायद नहीं है, लेकिन तब तक हमारे जूनियर विनियर आएंगे, वो भी करेंगे, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। लेकिन हम कंप्लीट करेंगे नो योर लॉ। हर लॉ का हम देंगे आपको, ऐसे ही देंगे जैसा भी एक एक कोड का दे रहे हैं ना। तो एक लॉ का फिर ऐसा समरी देंगे, फिर वो लॉ बताएंगे पूरा, फिर उसकी इंपॉर्टेंट सेक्शन बताएंगे, सब बताएंगे, और पूरा अपने भाषा में होगा, हिंदी में होगा। तो जनरल पब्लिक के लिए बनाना चाहते हैं मुझे इसको। हम्म। थोड़ा इस टाइम जाता है मेरा, घंटा 2 घंटा जाता है। अभी 2 घंटे 2 घंटे में मैं मोबाइल पे देख लो 4-5 कॉल आके गए। अभी मैं उसको ऑल बैक कर लूंगा, लेकिन एक दो केसेस भी निकल जाते हैं हाथ से। जाने दो, ईश्वर देता है, इधर नहीं तो उधर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी रहती है, वो हमने पूरी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माई थिंकिंग। आई एम नॉट इम्बाइब माई थॉट्स ऑन यू। आपको जो सही लगता है आप करो, मुझे सही लगता है मैं कर रहा हूँ। बस आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, इसलिए मुझे काम करने में इंटरेस्ट आता है। तो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ इसको, रिकॉर्डिंग को। वेलकम बैक फ्रेंड्स, लेट मी शेयर द स्क्रीन। We will complete balance two codes, labor code. Now code on social security 2020. The code on social security 2020 is a comprehensive labor and social welfare law enacted by the Indian Parliament to amend and consolidate existing social security laws with a goal of extending social security protection to all workers, including organized, unorganized, gig, and platform workers across India. It replaces and interprets multiple pre existing statutes in a single modern framework. Enactment and assent dates.
Parliament passed 28th September 2020. President assent 28th September 2020. Multiple provisions commenced through phases notifications since 2021 to 23. Not all sections are in force at once, but step by step it imposing. The structure of the code. The code is organized into 14 chapters and includes 164 sections and 7 schedules. Chapter-wise breakdown, chapter, subject matter, and approximate sections. Chapter 1, preliminary, short title, definitions, applications, 1 to 3. 2, social security organization, boards and bodies, 4 to 13. Chapter 3, Employees Provident Fund, 14 to 23. 4, Employees State Insurance Corporation, ESIC, Employees State Insurance Corporation, 24 to 52. Chapter 5, Gratuity, Section 53 to 58. 6, Maternity Benefit, 59 to 72. Chapter 7, Employees Compensation, Section 73 to 99. Chapter 8, Social Security and Says Building and Construction Workers, Section 100 and 108. 9, Social Security for Unorganized Gig and Platform Worker, Section 109 to 114. Section 10, Finance and Accounts, Section 115 to 120. Chapter 11, Authority Assessment, Authorities Assessment, Compliance and Recovery, Section 122 to 131. Chapter 12, Offenses and Penalties, Section 133 to 138. Chapter 13, Employment Information and Monitoring, Section 139 to 140. Chapter 14, Miscellaneous Provisions, Section 141 to 164. The schedule specified threshold for applicability, definitions of beneficiaries, and occupational diseases, etc. Key objectives of this code. Code on Social Security's key objective. The core objective includes amalgamation of 9 existing social security laws. ये कोड में 9 कानून पुराने इकट्ठा है. So that 9 laws are Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, ESI Act 1948, Maternity Benefit Act 1961, Payment of Gratuity Act 1972, Unorganized Workers Social Security Act 2008, Building Workers Welfare Says Act 1996, etc. Universal coverage of all employees and workers, irrespective of sectors, organized, unorganized, migrant, gig, and platform sectors. Simplified and harmonized framework for compliance, social security benefits, employers' obligation, and enforcement. Inclusion of new categories such as gig and platform workers with specific welfare schemes. Stronger workers' protection, that is, maternity benefit, gratuity eligibility for fixed term employees. 3. Important chapters and sections. Below are the key substantive chapters and sections every practitioner should know. Chapter 2, Social Security Organizations. These are the important. Social Security Organizations. Section 40, Section 4 to 13 establishes bodies such as Board of Trustees of Employees Provident Fund, Employee State Insurance Corporation ECIC, National Social Security Board, State Boards, Building Workers Welfare Boards, purpose, coordinate, and administer
the social security schemes. Chapter 3, Employees Provident Fund, EPF. Sections 14 to 23, EPF, Employee Provident Fund Scheme provisions, contributions rates, fund maintenance, exemptions, and transfers, aims at retirement savings, pension, and benefits for all employees in covered establishments. Chapter 4, Employee State Insurance, ESI. Section 24 to 52, ESI scheme, registration, contributions, inspection, benefits, including sickness, medical, disability, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब इसी ईएसआई बेनिफिट्स में आता है. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में ये सब बेनिफिट आते हैं. एक्सटेंड हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन फॉर एम्प्लॉयज इवन इन hazardous ऑक्यूपेशन. hazardous ऑक्यूपेशन मीन्स माइंस, कोल माइन, लाइक दैट, या जहाँ पे बहुत ऐसा लोहा तपा के बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऐसे भी जो वो इंडस्ट्रीज रहती है, दैट इज कॉल्ड hazardous ऑक्यूपेशन. Chapter 5, Gratuity. Sections 53 to 58, Gratuity Eligibility, Calculations and Continuous of Service, Notifications and Payment Rules. Under the code, fixed term employees qualify for gratuity after 1 year of service, a notable expansion. Chapter 6, Maternity Benefit. Sections 59 to 72, Maternity Leave and Pay, Medical Bonus, Nursing Breaks and arch facilities, protection against dismissal during pregnancy. These broadly codified and strengthen prior maternity protection. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए. मैटरनिटी बेनिफिट खाली मदर को मिलता है ऐसा नहीं है, मैटरनिटी बेनिफिट फादर को भी मिलता है. खाली फादर को थोड़ा कम मिलता है, 1 महीना 2 महीना ही मिलता है, लेकिन मदर को लगभग 5-6 महीना मिलता है. एग्जैक्टली फिगर आपको रूल्स में मिलेगा. Chapter 7, Employees Compensation. Section 73 to 99, Employer Liability for Workplace Injury, Disability, Disease and Death, Quantum and Calculation of Compensation, Fatal Accident Procedures, Communication of Payments. These built on past principle from the Employees Compensation Act while integrating into the code. Chapter 8, Building and Construction Workers. Section 100 and 108, 100 to 108, Registration of Workers, Welfare Fund Contribution and Utilization, Safety, Health and Welfare Measures, addresses a historically high risk and unregulated workforce. Chapter 9, Social Security for Unorganized Gig and Platform Workers. Section 109 to 114 defines unorganized gig and platform workers, mandate schemes for insurance, health, and pension benefits. This is the first time Indian labor law explicitly recognized gig and platform worker as beneficiaries of social security law. Great thing. Congratulations to politicians who have created this. Chapter 12, Offenses and Penalties. Section 133 to 138, Penalties for non-payment of contributions, enhanced penalties for repeat defaults, company offenses and compounding provisions, covers enforcement deterrent for employers. 4, Implementation Statute, Implement Status and Rules.
implementation of statute and rules. The national government has faced enforcement of various sections. Sections related to EPF and ESIC pension options, etc., have been brought into force via notifications. Draft central rules for Social Security Code have been released for consultation January 2026 to operationalize detail like registration, contributions, claim, benefits, procedure, records, and compliances norms. Judicial and constitutional contexts. As the Code on Social Security 2020 is relatively new and many substantive provisions are not yet fully enforced, direct Supreme Court jurisprudence under the code itself is still developing. One notable avenue of judicial engagement relates to implementation and rights of new categories, gig platform workers. Supreme Court gig and platform works implementation. In 2024-25, Supreme Court questioned delay in framing rules and schemes under the Chapter 9 for unorganized gig and platform workers. The court sought timeline from the government for giving effect to these social security provisions. Regarding that, absence of rules undermine the protective purpose of this code. While not yet final pronouncement of this court's interpretation, this signals judicial insist on actual implementation of workers' protection, not mere statutory provisions. Legal principles from related social security laws. Although direct code jurisprudence is emerging, decade of Supreme Court decisions on pre-existing social security statutes continues to influence its interpretation. बेनिफिशियल जो अभी तक के जो पुराने लॉ है ना, पुराने लॉ में भी जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के कारण डेवलप हुए हैं, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग दैट. Beneficial nature of social security legislation in cases involving the Employees State Insurance Act, courts have held that such schemes are welfare legislation and should be interpreted liberally to further workers' benefit. Maternity benefit and contractual employees. Landmark decision like Dr. Kavita Yadav versus Secretary, Ministry of Health, 2024 reinforced that contractual employees are entitled to maternity benefit under Social Security law framework, while under the older Maternity Benefit Act, such principles will guide maternity provisions in the code. Priority of Social Security dues under insolvency. Articles of code now require that PF and other dues be charged as a priority claim under IBC priority regime, meaning benefit remain protected in insolvency context. हमने कल देखा है ये सब चीजें इंसॉल्वेंसी में. कल का लेक्चर भी बहुत अच्छा था. आई गॉट वेरी सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है तो फिर समझ जाता हूं मैं कि लेक्चर अच्छा हुआ. जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो फिर सो हुआ. ऑडियंस को पता नहीं चलता है. ऑडियंस पहली बार मेरा वीडियो देखती है तो उनको अच्छा ही लगता है, लेकिन आई माई सेल्फ नोज है कि भाई मैं अंदर से सेल्फ सेटिस्फाई हो क्या काम करते हैं. जैसे आर्गूमेंट करते समय कभी कभी केस जीत भी जाते हैं तो भी सेल्फ सेटिस्फाई नहीं रहता है, क्योंकि केस जीतने के बाद तो सेल्फ सेटिस्फाई रहना चाहिए ना. लेकिन हमको मालूम रहता है कि कुछ चीजें जो है ना हम और ऐड कर सकते थे इसमें, और कुछ और ऐड कर सकते थे. ऐसा होता है और ऐसा होना ही चाहिए. वेन यू आर आर्गुइंग, वेन यू आर ड्राफ्टिंग, ये करते समय आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि यू हैव ड्राफ्टेड इट परफेक्टली.
You have argued it perfectly. आपको सोते समय एक दो तीन बातें ऐसी याद आनी चाहिए कि भाई ये रहा ये रहा ये रहा. सो यू कैन ऐड दैट ऑन और कंटिन्यू प्रोसेस रिवॉल्यूशन का चलते रहता है. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Key policy and practical highlights. Universal coverage extending to gig platform and unorganized workers for the first time. Gratuity for fixed term employees after 1 year of service. Expanded maternity benefit includes arch nursing breaks and protection against the dismissal. Integrated structures EPFO, ESIC boards funds for coordinated implementation. Board broad financial and compliance mechanism includes social security fund inspection, re record keeping and penalties. Now concluding remarks on this code. The Code on Social Security 2020 marks a transformative shift in Indian labor law by creating a single, universal, and conclusive social security framework. It consolidated 9 major labor law enactments into one system, extends coverage to previously excluded workers, that is, gig and platform workers, and strengthen protections across provident funds, state insurance, maternity and compensation, and other welfare domains, while case laws under the new code is still unfolding. Existing judicial principles on social security, emphasizing beneficial construction and worker protections, will influence its interpretation as implementation advances. So this is the third code. Now, fourth, last but not least, very important code. Occupational Safety, Health and Working Condition Code. सबसे ज्यादा कानून इसमें इकट्ठा हुए हैं. 13 laws are consolidated into one code. The Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020, Act number 937 of 2020, is a central labor law enacted to consolidate, simplify, and modernize workplace safety, health, and working condition statute in India. It amalgamates and replaces 13 central labor laws into unified statutory frameworks. It was passed by Parliament in 2020 and brought into force with the effect from 21st November 2025 as a part of 4 labor code reforms. Structure of this code, chapters and sections. The OSHWC of Occupational Safety, Health and Working Condition Code contains 143 sections organized into 14 chapters and 3 schedules. Chapter wise breakdown. Chapter, subject matter and sections. Very important. Chapter 1, preliminary, section 1 to 2. Chapter 2, registration, section 3 to 5. Chapter 3, duties of employers and employees. ये खाली ये पढ़ते हैं ना तो भी पता चलता है वो लॉ में कौन से चैप्टर में क्या छुपा हुआ है. ये बहुत लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों. लॉयर मास्टर तो कभी नहीं बनता है. वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा तो भी मास्टर कभी नहीं बनता है. वो तो विद्यार्थी रहता है. लेकिन एक अलग पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है डे टू डे डे टू डे डे टू डे. जैसा एनरिचमेंट बढ़ता है ना आपका एक्यूमेंट जैसे जैसा बढ़ता है ना लॉ का वैसा वैसा एक अलग अलग झलक आपके चेहरे पे झलकती है दोस्तों. एंड इट गेट्स इम्पैक्ट ऑन जजेस ऑल्सो. तो जज के सामने खड़े होने के बाद ही जजेस पे थोड़ा सा आपको वैल्यू देना सुनना, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू. ऐसा है तो वो बढ़ता है. सो ऑलवेज ट्राई टू गिव सम टाइम रेगुलरली रीडिंग राइटिंग अदर देन योर रेगुलर वर्क्स. नहीं तो सारा 4 केसेस आए, 4 केस का स्टडी कर रहे हैं, 4 केस ड्राफ्ट कर रहे हैं, 4 केस करते, वो तो वो रोज ही करते, तो पैसे के लिए करते हैं, काम के लिए करते हैं. वो 4 केस खत्म करने के बाद जो आपका रूटीन का काम नहीं है तो भी आपने कुछ वक्त लॉ को देना चाहिए.
That is my advice. I'm not so big to give any advice, but just is my submission to you. You can think over that. Chapter 3, duties of employers and employees, section 6 to 15. Chapter 4, occupational safety and health, section 16 to 22. Chapter 5, health, safety and working conditions, section 23. Chapter 6, welfare provisions, section 24. Chapter 7, hours of work and annual leave, section 25-32. आप इसके कट भी कर सकते हैं ये वीडियो आपको कोलैबोरेशन करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है मैंने, में कोई कॉपीराइट रखा नहीं मेरा इसमें। इसलिए आपको कभी ऐसा लगता है कि ये वीडियो का ये इतना पार्ट कट करके मैंने अलग करना चाहिए, उसको वापस किधर तो भी डालना चाहिए, डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मेरे परमिशन की कोई जरूरत नहीं आपको। ऐसा ऐसा कर सकते आप, क्योंकि अभी देखो खाली ये चैप्टर वाइज ये वाइज इतना पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पार्ट भी बार बार सुनते हैं ना तो हमको चैप्टर वाइज कौन से सेक्शंस है, उसमें क्या है, सब याद आता है। चैप्टर 7, आवर्स ऑफ वर्क एंड एनुअल लीव्स, सेक्शन 25 to 32. Chapter 8, maintenance of registration, register, record and returns, section 33. Chapter 9, inspector cum facilitator and authorities, section 34. Chapter 10, special provisions, that is women, section 43. Chapter 11, special provisions for contract, ISMW, etc., section 46. Chapter 12, offenses and penalties, section 94 to 114. Chapter 3, social security fund, section 115. Schedules list of hazardous processes and other technical data, schedule 1 to 3. The code reduces dozens of overlapping acts and thousands of sections and rules into consolidated framework for easier compliance. Core objective and scope. The Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020 aims to provide uniform workplace safety and health standards across industries, streamline and modernize safety, health and welfare and working condition laws, reduce compliance burden via single registration and simplified reporting, expand coverage to multiple sectors, facilitate factories, mines, plantations, constructions, transport, and more, strengthen workers' rights and protections, including welfare facilities, accident reporting, and safety audits. It applies to establishment with 10 or more workers and to specified classes of workers such as factories, mine with tailored provision. तो ये जो कोड है ये 10 से आगे जहां पे वर्कर्स है उनके लिए एप्लीकेबल है, फिर वो प्रोप्राइटरी फर्म रहो, पार्टनरशिप रहो, प्राइवेट लिमिटेड रहो, पब्लिक लिमिटेड रहो, कुछ भी हो, 10 के आगे अगर एम्प्लॉयज हैं तो दिस कोड इज एप्लीकेबल टू देम. Key provisions and important sections. Registration, Chapter 2, Section 3 to 5. Employees must electronically register establishments with the appropriate government within 16 days of applicability and notify commencement closures. B. Duties of employers and employees, Chapter 3, Section 6 to 15. Employers must ensure hazard-free workplaces, issue appointment letters, conduct health tests, dispose hazardous waste, and maintain safety infrastructure. Then employees must follow safety instructions and assist in risk mitigations. C. Occupational safety and health standard,
Chapter 4, Sections 16 to 22. Establishes National and State Occupational Safety and Health Advisory Board, which is a very great movement. Includes research, survey, safety officers and committee mechanism. Great. D. Health, safety, working conditions. Chapter 5, Section 23 onwards. Employer must maintain workplace hygiene, ventilation, drinking water, adequate space, lighting, toilets, and waste disposals. Welfare provisions, Chapter 5, Chapter 6, Section 24 onwards. Employers must provide washrooms, bathing places, lockers, seating for workers standing long hours, canteens, first aid kits, restrooms, art facility in certain establishment. Hours of workers, hours of work, annual leave with wages, chapter 7, sections 25 to 32. Standard work 8 hours a day and 48 hours a week. Overtime at twice the rate with worker consent. Provisions for specific categories, that is journalists. Inspections and enforcement, chapter 8 to 9. Inspector cum facilitators replace traditional inspectors aiming at compliance, facilitation, and enforcement. District magistrate and chief inspector powers includes for specific sectors like mines. H. Special provisions, chapter 10 and 11. Women's employment right and adequate safety arrangements for night work with consent. वुमेन को नाइट वर्क विदाउट हर कंसेंट आप नहीं दे सकते. दिस इज न्यू लॉ. नाइट शिफ्ट अगर देना है वुमेन को तो उसका सेफ्टी का फीचर रखना है एंड दैट एम्प्लॉयर शुड टेक केयर ऑफ हर सेफ्टी. नो हैरेसमेंट शुड बी डन विद हर एंड without her consent no employer can give the night work to woman. Regulates, ये इसका प्रचार करो दोस्तों. मैंने बार बार पहले भी बोला है, अभी बोला है, इसका प्रचार करो. लो थोड़ा टाइम दो, आपका भी प्रचार हो जाएगा और काम होगा. देश के कानून इतना अच्छा देश बना है और कानून अगर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो कानून को कोई अर्थ नहीं रहेगा. और मैं तैयार हूं, रेडी. आप लॉ कॉलेज में अरेंज करो, किधर अरेंज करो, जूम का लिंक में मेरे आया हो पेड जूम अकाउंट तो मैं जूम का लिंक भेज दूंगा. उसको रिकॉर्ड भी करेंगे. वो कॉलेज के नाम से हम हमारे वीडियो चैनल पे भी डालेंगे. उनको उनके चैनल पे डालना तो उनको डालने देंगे, उनका भी नाम करेंगे. डीन बोलेगा, ये बोलेगा, प्रिंसिपल बोलेगा, सब बोलेंगे. विल टेक एंड एज पर द कंडीशंस ऑफ दैट कॉलेज. इफ दैट कॉलेज वांट इन इंग्लिश वी विल गिव एंटायर प्रोग्राम इन इंग्लिश. इफ दैट कॉलेज वांट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स वी विल गिव दैट इन हिंदी इंग्लिश. वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके लिए करो कोशिश, करो कोशिश. नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का ब्रांच खोलो आप आपके गांव में, आपकी सिटी में. लो हमारे से, हमसे हम भेजेंगे आपको सर्टिफिकेट. यू आर एफिलिएटेड विथ नेशनल लॉ क्लब. तो एक पावर अलग आता है. प्रोविजंस एम्प्लॉयमेंट का, हाँ सेकंड जो एच में का सेकंड बुलेट. रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर, interstate migrant workers, audio video workers, building construction workers, बीडी workers, plantation workers, etc. कितना सोचा है दोस्तों लॉ कमीशन ने. Offenses and penalties, chapter 12, sections 94 to 114. Penalties for non-compliance vary based on severity, with fines and possible imprisonment for serious breaches. Focus on compensation to victims and compliance improvement. Social Security Fund, Chapter 13. Establishes a social security fund for unorganized workers, including safety and emergency welfare measures.
Miscellaneous and rule making. Chapter 14. Sections empower appropriate government to make rules, regulations, bylaws, exemptions, and provide transition from old law. Civil courts are barred where code provides alternative remedy. Note down, सिविल कोर्ट बार है ये मैटर हैंडल करने के लिए व्हेन कोर्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव रेमेडी. जहां पे ट्राइब्यूनल है वहां पे ट्राइब्यूनल में ही जाना चाहिए. सिग्निफिकेंट रिफॉर्म कंपेयर टू ओल्ड लॉज. Occupational Safety, Health and Working Condition Code amalgamates 13 central acts. ऊपर मैंने 13 सेंट्रल एक्ट्स का लाइन दिया था, लेकिन 13 सेंट्रल एक्ट्स नहीं बताए थे आपको. वो बताता हूं अभी. इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 दैट ऑलरेडी रिपील्ड, द माइंस एक्ट 1952, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, the Contract Labor Regulation Abolition Act 1970, the Interstate Migrant Workmen Act 1979, and other dealing with dock workers, journalists, and motor transport workers, etc. ये सब के सब 13 कानून इसमें इकट्ठा है. By consolidating them, the code provides uniform definitions, standards, and enforcement procedures. Judicial principles and relevant court contexts. While specific Supreme Court cases under the OSHWC code itself are yet to develop, given its recent enforcement in November 2025, existing judicial principles on workplace safety, empowered duties, and worker protections under predecessor laws, यानी कि पिछले लॉ, predecessor laws, inform its interpretation. This includes occupational health and safety jurisprudence. So which previous laws develop a good principle? So I'm discussing that good principle here. Pre-code but relevant. Occupational Health and Safety Association versus Union of India 2014-2008 SC. Supreme Court recognized the need for guidelines and frameworks for occupational health and safety standards in various industries to protect workers and reduce hazards. Environmental and Industrial Safety Doctrine. MC Mehta versus Union of India 1987. Siram gas leak. Through preliminary environmental, the SC Supreme Court emphasized strict liability and occupationality for workplace hazards, principles that resonate with safety norms in the OSHWC code. Workplace rights and conditions. विशाखा एंड अदर्स. ये जो विशाखा एंड अदर्स है ये केस के कारण ही फिर पॉश एक्ट जो है वो तैयार हुआ है. So Vishaka and other, this is the one of the leading case of Supreme Court in AWAR examination also. So in my book, this case is given. AWAR exam, I have published 3 books on AWAR for AWAR examination. The total 4 subjects are there. 4th book is under process, so I will publish that also. I'm not AWAR, but I am in front of. I don't want to become AWAR. बिकॉज मुझे आर्ग्यूमेंट ही अच्छा लगता है. मुझे फाइलिंग बिलिंग नहीं अच्छा लगता. ड्राफ्टिंग वगैरह करते थे हम पहले. फाइलिंग मैंने लाइफ में कभी नहीं किया. मैं कभी रजिस्ट्री भी गया नहीं. मैं तहसील में काम करता तो भी रजिस्ट्री का काम मैं किसी क्लर्क से करवा लेता था या जूनियर से करवा लेता था. जब मैं जूनियर था तब भी मेरे पास जूनियर था कोई. तो मेरा रजिस्ट्रेशन जिस दिन आया उस दिन से ही मैंने केस फाइल करना शुरू किया, क्योंकि मैं 1 साल पहले से ही केसेस लेता था, लेकिन दूसरे लॉयर के नाम से फाइल करता था. आर्गूमेंट भी वही लॉयर करता था, उसको शेयर करता था मैं पैसा. तो केस लेना तो मैं पहले स्टार्ट कर दिया था 3rd LLB से. लेकिन जब मेरा आ गया उस दिन से मैंने मेरा वकालतनामा फाइल किया. बट आई हैव नेवर विजिटेड रजिस्ट्री ऑफिस इन तहसील, इन डिस्ट्रिक्ट, इन हाई कोर्ट,
इन सेस्टर ट्राइब्यूनल एंड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अभी 2018 से हूं मैं, 2018 से लेकर 2025 तक, आज तक मैंने रजिस्ट्री ऑफिस नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट। मेरे सब जूनियर करते हैं, मेरे एसोसिएट करते हैं, कुछ डिफिकल्टी आती है तो मैं फोन पे बात कर लेता हूं उनसे, इसलिए मेरा पूरा फोकस इसके ऊपर। हाँ, ड्राफ्टिंग मैंने किया है शुरू में ड्राफ्टिंग किया है, लेकिन जब लगा कि भाई ड्राफ्टिंग हम अभी दूसरे से करवा सकते हैं इंस्ट्रक्शन देके, तो आई हैव डाइवर्टेड दैट। हैंडसम पैसा शेयर करना पड़ता है दोस्तों। जो हम पैसा कमाते हैं ना, उसमें का 25% अगर शेयर करते हैं ना जूनियर लोगों में, एसोसिएट्स में, तो आराम से आपका काम हल्का होता है और आप अगला काम ले सकते हैं। लेकिन सबका सब पैसा मेरी जेब में ही चाहिए, ऐसे कुछ लॉयर रहते हैं, हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सब कुछ वो ड्राफ्ट भी वही करेगा, फाइल भी वही करेगा, डिपेट भी वही क्लियर करेगा, और आर्गुमेंट भी वही करेगा। तो फिर वो महीने में 1 2 3 केस से ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन मैं 10 केसेस रोज आते हैं तो भी आई हैव कैपेसिटी टू ड्राफ्ट फाइल एंड आर्गू, बिकॉज ऑफ द टीम। ये 10 नहीं आते रोज, हाँ, नहीं तो आपको लगेगा बहुत पैसा कमाते हैं सर। हाँ, हाँ। लेकिन एक जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई हैव टोल्ड यू दैट वर्कप्लेस राइट एंड कंडीशन, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997. While on sexual harassment, the Supreme Court recognized the workplace dignity and safety condition for women, influence later statutory framework for worker protection and employers' obligation. Interpretation of safety and welfare duties. High Court routinely draw on Old Factories Act, Mines Act, and Contract Labor Act decisions. For example, employers' duty to care hazard reporting, which will continue to inform OSHWC code, Occupational Safety, Health and Working Condition Code, adjudication until direct Supreme Court pronouncement emerged. Key policy highlights and worker benefits. Mandatory appointment letters for all workers under employer duty. Free annual health checkup and hygiene standard at workplaces. Workman work Women's right to night work with consent and safety safeguards. Single registration and simplified compliance replacing multiple registrations. Expanded coverage of migrant and contract workers with travel allowance and portability. Conclusion. The Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020 marks a major reform in Indian labor law by consolidating multiple workplace safety statutes into a single modern and harmonized legal framework. It strengthens worker protections, clarifies employer duties, unifies safety standard across sectors, and simplifies regulatory compliance. While judicial jurisprudence directly under this code is still developing, established Supreme Court principles on workplace safety, employer liability, and workers' dignity will guide interpretation and enforcement in the coming years. फ्रेंड, ये सबसे लंबा हुआ महाराज, लेकिन नो इशू। नाउ आई हैव स्टॉप दिस स्क्रीन शेयरिंग, और काफी लोग बने रहे इसमें, रहे आखिर तक। और ये वीडियो जब आएगा तब थोड़ा सा आपको पार्ट पार्ट में ऐसा देखना पड़ेगा। मैं करता हूँ ना कभी कभी 1.5 2 घंटे की वीडियो किसी के रहते हैं ना, तो फिर मैं सुबह घूमने के लिए जब जाता हूँ ना, दैट टाइम आई एम हियरिंग दैट। मेरा प्रीमियम अकाउंट यूट्यूब का ना, तो वो फिर मोबाइल बंद भी रखते हैं तो ऑडियो आ जाता है, तो बस कान को लगाओ और घूमते घूमते जाप भी करो, वो भी करो, होता है। फिर आज आधा घंटा, कल आधा घंटा, ऐसा होता है। एक्सरसाइज करके फिर मैं घूमने के लिए जाता हूँ, घूम के आता हूँ, फिर चाय पानी वगैरह होता है। ऐसा है, रूटीन है यहाँ पे। यहाँ पे रहो, किधर भी रहो, कोई फॉरेन टूर में भी रहते तो वही सेम रूटीन रहता है। सो फ्रेंड्स,
now I have to end. I cannot discuss more things because it is too late now. Just I am giving opportunity to Manoj to conclude this session. Manoj, now you can conclude this session. Thank you. Thank you very much, sir. Hmm. And thank you to all the viewers to have such a long lecture and they have attended and get the insight of the four laws. And the takeover from these is that the law has basically simplified all the complexity that we have in a labor law with the four laws, and it has become a universal social security. And we have a defined wages, which was earlier very complicated to understand what is come in wages, what is come in salary, and which part we have to include, which we have to exclude. So everything, the definition is clear for all. And the work protection, which is a very important for the women, that has been introduced in this particular act. So thank you very much to all of you at the end. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Bye all. Bye.